પરિચય આપી દો. આજના આપણા વક્તા આશાબેન પંકજ ગાલા, ગામ બ્રિજપુર અને રહેવાનું હાલે કેલિફોર્નિયા. તેઓએ 1984માં બીએસસી વિથ મેથેમેટિક્સ મુંબઈ યુનિવર્સિટીથી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ છે. એના પછી તે સિસ્ટમ એનાલિસિસ એન્ડ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગમાં પણ મહારાષ્ટ્ર ટેકનિકલ બોર્ડથી તેઓએ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે. ન્યુટ્રિશનલ એજ્યુકેશનલ ટ્રેનર તરીકે તે હાલે પણ કામ કરી રહ્યા છે અને તેની ડિગ્રી તેઓએ ન્યુટ્રિશનલ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી પ્રાપ્ત કરી છે. ટૂંકમાં પરિચય આપવાનું હોય તો આપણા કેવીઓ સમાજના લાડીલા ભવાનીભાઈના તેઓ પુત્રવધુ છે. તો આઈ જસ્ટ રિક્વેસ્ટ કે તેઓ હવે માઇક પકડે એન્ડ શી સ્ટાર્ટ વિથ ધ પ્રેઝન્ટેશન. એના પહેલાં જસ્ટ એક માહિતી, બે સૂચનાઓ આપવાની છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કે તમે પ્લીઝ તમારા મોબાઈલ ફોન જે કન્ટિન્યુઅસ રિંગિંગ પર હોય છે તે આજના દિવસ માટે જસ્ટ 2 કલાક માટે સાયલેન્ટ મોડ અથવા તો વાઇબ્રેશન મોડ પર કરી નાખજો, તેથી કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય લેક્ચરની દરમિયાન. અને લેક્ચર પતી ગયા બાદ અહીંયા 15-20 મિનિટનો ક્વેરી સેશન છે, તો તમે તમારા ક્વેશ્ચન્સ નોટ કરી રાખજો. તો વન્સ લેક્ચર પતી ગયા પછી તમે એ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. આઈ રિક્વેસ્ટ આશાબેન ટુ જસ્ટ થેન્ક યુ. મારી ગુજરાતી સારી નથી એ તમને આ કલાકમાં ખબર પડી જશે, પણ પ્રેક્ટિસ થશે એટલે હોશથી હું લેક્ચર તમને ગુજરાતીમાં આપું છું. પહેલાં તો મને શુક્રિયા કહેવું પડશે તમારા કેવીઓ સમાજને. થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી મારું જે એજ્યુકેશન જ્ઞાન છે એ તમારી સાથે હું શેર કરી શકું. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ જે પણ કેવીઓના કમિટી મેમ્બર્સ છે, થેન્ક્સ અ લોટ. હું જે પણ થોડીક એક્સપ્લેનેશન આપું છે મેઇનલી એ કે જે પણ તમે આજે શીખી જશો અહીંયાથી અને ચેન્જીસ અપ્લાય કરવાના હો, પ્લીઝ તમે તમારા ડૉક્ટર સાથે ડિસ્કસ કરશો ફોર ચેન્જ ઓફ મેડિકેશન. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવરી ટાઈમ એ લીગલી આઈ એમ સપોઝ ટુ સે દેટ બધાને કે તમે કંઈ પણ ડાયટરી ચેન્જીસ કરો તો તમારા ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરજો. મારું લેક્ચર ઇઝ બેસિકલી એજ્યુકેશન, જે તમે તમારા માટે અપ્લાય કરજો એન્ડ દેન અકોર્ડિંગલી હોપફુલી તમારા ડૉક્ટરની સાથે કન્સલ્ટ કરીને ચેન્જીસ અપ્લાય કરજો. મોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન મને હતી યુએસની વધારે હતી એન્ડ ઇટ વોઝ પ્રિટી ચેલેન્જિંગ એન્ડ એક્સાઇટિંગ એન્ડ બધા જ એડજેક્ટિવ યુઝ કરીને કે જ્યારે ઇન્ડિયામાં સબ્જેક્ટ આઈ ડેડિકેટેડ ટુ હાર્ટ ડિઝીઝ મને ઘણી ખરી ઇન્ફોર્મેશન મળી જે મને નહોતી ખબર, અને આઈ હોપફુલી કે તમને હેલ્પ કરે. ઓકે, આઈ ટ્રાય કે તમે અમુક એક્સપ્લેનેશન ગુજરાતીમાં કહી શકું. આ શબ્દ હું બહુ બધું યુઝ કરવાની છું. કેલરીઝ જે ઉષ્ણતાનો એકમ, ન્યુટ્રિશન ખોરાક, પોષણ, અને ઘણીવાર ખોરાક એ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વર્ડમાં ગણાય છે, બટ હું જ્યારે ન્યુટ્રિશનનું એક્સપ્લેન કરું હું રિલેટ કરું ફાઇટોકેમિકલ્સ, વાઇટામિન્સ, મિનરલ્સ, એ બધું દેટ ઇઝ ન્યુટ્રિશન, દેટ ઇઝ ખોરાક, એ વસ્તુ છે પોષણ. અને પછી હેલ્થ એ શું છે? શારીરિક માનસિક આરોગ્ય, શરીરનું સ્થિતિ અને તંદુરસ્ત. એ બધાની વિચારધારા અલગ હોય. મને ઘણા જણા જોઈને કે અરે તું તો દુબળી પતલી છે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ હું દોડી શકું છું, તમે કહો તો ડિગિંગ કરી શકું છું, માણસોનું કામ કરી શકું છું, અને આઈ એમ 49 years old. એટલે જસ્ટ ટુ ગીવ યુ એન આઈડિયા કે મને થકાન, તમે મારા ફેમિલીને પૂછો યા મારા સાવરાવાળાને પૂછો, મને થાક જલ્દી ન લાગે, મેઇનલી બિકોઝ મારું જે ન્યુટ્રિશન ઇન્ટેક એ એનર્જી લેવલ છે. એટલે મેબી હું દુબળી પતલી લાગીશ પણ છું નહીં દુબળી પતલી. એટલે એ પણ રિલેટેડ છે. ઘણા જણા અરે બરાબર થાતી નહીં હોય, એ રિએક્શન
ફર્સ્ટ જ આવે બધાને. ઓકે, હાર્ટ ડિઝીઝ ઇન્ડિયામાં. ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ નો કે એકચ્યુઅલી હાર્ટ ડિઝીઝ એ બીમારી હવે એકદમ ફેલી ગઈ છે ઇન્ડિયામાં. એ નંબર 1 કોઝ થઈ ગયું છે મરણનું. જે તમે પત્રિકાઓમાં વાંચશો તો એનું ઘણા મોત એના લીધે વધારે થાય છે. જ્યારે મેં તમને કીધું કે મને જ્યારે મારે મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટેટિસ્ટિક ડેટા ન્યૂઝ હું મારું યુઝલી યુએસનું હોય, રિસર્ચ બધું યુએસનું હોય, તો આ પ્રેઝન્ટેશન માટે મેં થોડી શોર્ટકટ કરી, થોડા ન્યૂઝ વાંચ્યા ઇન્ડિયન રિલેટેડ, અને અમુક જે સ્ટ્રાઇકિંગ ન્યૂઝ મને લાગ્યું કે તમારી સાથે હું શેર કરું. અને લેટ્સ હોપ કે એ ન્યૂઝ તમને આઈડિયા આપે કે કેટલી આ બીમારી. Yeah, my mother આવ્યા છે. It's a surprise મારી માટે. કચ્છી મેં બોલા વાંધો ને દોડ દો. I don't know હું સમિતિને પૂછું, કચ્છીમાં બોલું, બકુલભાઈને પૂછું, whatever is convenient. મિક્સ કરીશ. આમે મારી કચ્છી સારી નથી, ગુજરાતી સારી નથી, બધું મિક્સ જ કરીશ એટલે ચાલશે. રાઈટ? તો એ ન્યૂઝ પણ વાંચીવો. એ પહેલો ન્યૂઝ વેરી સ્ટ્રાઇકિંગ. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એ આર્ટિકલ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એ રિપોર્ટ કહેવે કે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ડિઝીઝ સૌથી વડી ને વડી બીમારી કહેવાય 8 વર્ષે. ओके 2020 में ये સૌથી બડી બીમારી આખી ઇન્ડિયા में फैलाने वाली है. એટલે એ અહીં સમજેगा ना કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન લગભગ કરો કરે કે યરલી ડેટા કલેક્ટ કરીએ મળે કન્ટ્રીઝ જા એમે હાણે પણ અમેરિકા જે બાજુ में જ છે નકર નોર્મલી અમેરિકા એકદમ આગળ રહી હાર્ટ ડિઝીઝ ને પ્રોબ્લેમ્સ પોતે વધારે વા પણ પાન કોઠિયાને આવ્યા પાન પણ અગિયાર છે રહ્યા અને ખોટી રીતે એનો માટે બીમારી હોણી જ ન ખપે પહેલે તો. बायो न्यूज़ आउट टाइम्स ऑफ इंडिया में वाचो ई पर 2020 में ई प्रोजेक्ट ये था कि ऑलमोस्ट 47 लाख मरण ई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जे रीते અને કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર डिजीज आई डोंट नो આનું કે ટર્મ આમ થોડો એક્સપ્લેન કરિયા. કાર્ડિયો રિલેટેડ ટુ હાર્ટ, વેસ્ક્યુલર નસું तो पांजी घट टाइप की बीमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जे नीचे है. कार्डियोवैस्कुलर में हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, हेमरेज है, एनी मरे रिलेटेड बीमारी ईहन ग्रुप में अच्छे वाला है. तो ई पर 8 वर्ष में अंजा मरण बढ़े वाला है. એટલે એ ઘટે ના વાળું મરણ વધે જ વાળા है. ॿियो मूंखे बहुत स्ट्राइकिंग लॻो. दिस इज वेरी आमानी प्रजा लाइक नॉर्मली आसी आउं जब भणियो न्यूट्रिशन जो जब भणींदी हुआ त हिस्ट्री वे न्यूट्रिशन जी अने ऑन हिस्ट्री में ई लोग असांखे एक्सप्लेन कई कि राजाओं जी बीमारी हार्ट डिजीज डायबिटीज जाडोपण राजाए खे थींदो अने कहेवत बि नथी आहे ओ पेट जंहिंजो वॾो आहे तो सुखी मानस है. पर हाणे मूंखे ख़बर आहे कि जंहिंजो पेट वॾो है उनकी बीमारी जा प्रॉब्लम जरूर है. એટલે ई थिंकिंग हाणे साधारण माण्हू में अची वई आहे कि साधारण माण्हू के हाणे जे राजा जी बीमारी हुई हाणे साधारण माण्हू के अची वई. and it's very I would say sad क्योंकि बीमारी पुठिया घर खावा जेवाने पैसा खावा जेवाने and that is the reason मुझे लगे कि ही पण घनारे वाला कि आई दादा जब पैसा बराबर वापरे सको बीमारी ने दवाओं पुठिया अंकता बे करते वापरे सको होपफुली आई ज्ञान गने में हजती वाला. लास्ट न्यूज हमरो ने लोका इंडिया टुडे लोका हमरो रिसर्च किया हुआ અને रिसर्च में लोग पूरा किया कि आखिर इंडिया में परसेंटेज वाइज कई बीमारी थी मारू વધારે ભણીએ તા ई અહીંથી જાણવું અને इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि आई विचारींदा कि સૌથી વધારે બીમારી में મરણ
एंड ऊपर टॉप आई डोंट नो आ लोग के दसाई दो के नाम पर સૌથી પહેલી જે બીમારી जो नाम है કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ડિઝીઝ અને उनमें 26% માડું મરે વનેતા અને 22% બાયડિયું મરે વને અને આમ નોર્મલી મળી કે આમ નેરિયા હાથે કે તાવથી મરે ડરીએ એનો તાવ જ એકદમ ડરે વને એનો અને તાવ जी बीमारी मलेरिया आई मीन कटी ओछे टकेથી માડું મરેતા ई रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स में आई નેરિયા था કે यू नो ही हाथी पाके डरे जो पर नॉर्मली ताव में मरेથી डरी आई मीन दिस इज ई पाके थिंकिंग चेंज करे जी है कि ही पाके जाने जो है कि ही को पण हंथी मरण बचे है पहला ही मरण वाना हणे ने पहला इंडिया में मरण के जब ताव जा स्मॉल पॉक्स के चाइल्ड बर्थ हेड़ा मरण बा हणे तो मरण ए नवी डिजीज जे आवी वही उनकी मरण बढ़े है डेटा मोस्टली यू नो अमेरिकन पब्लिक के ऊपर ही डेटा મળ્યો है पर आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि केवी રીતે 100 વર્ષ પહેલા ई बीमारी बीज ना कोई पण देश में खाली इंडिया की बात नहीं कहीं हमें कोई पण यूरोपियन कंट्रीज में आओ जी पहला आगे समझायो कि ई बीमारी राजा में जी बीमारी थी यू नो हिस्ट्री में ये लोग का ऐसे डिटेक्ट किया कि राजा में વધારે ई बीमारी थी तो आई ने का 100 વર્ષ પહેલા यू नो मरण में भी डॉज थींदा 1000 बचान ओके અને હણે આઈ ગયો 2000 में मरण ऑलमोस्ट 700 થીતા 1000 बचान खाली कार्डियोवेस्कुलर ने हार्ट डिजीज में यू नो આટલો રેટ અંજો વધે ई આપણો બહુ સારો आई थिंक आई આનો કે आई पेपर અને मुझे जस्ट शेयर करनो आ पांजी कच्ची कम्युनिटी जे डेटा मुझे सौरो कलेक्ट किया हुआ है वो इंप्रेसिव है कि अभी यू नो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क मैं कोई पर डेटा कलेक्ट करो तांजी डिटेल्स आके मारे करनी है अभी मेहनत ही डेटा कलेक्ट किया हुआ 5 महीने जो डेटा ही कलेक्ट किया आई नहीं था कि 195 मरण वा टोटल पत्रिका में नोंद किया हुआ पत्रिका जी અને નહીં था कि 50% ऑलमोस्ट 101 हार्ट फेल जलीने मरण था हार्ट फेल ऑलमोस्ट 50% जे पत्रिका जा मरण हार्ट फेल जावा અને ई पांजी कम्युनिटी कच्छी आई लोग वठायो એટલે आई विचार्यो आई ब कितरे मजानु हकड़े जणे के कार्डियोवेस्कुलर डिजीज थेजा चांसेस है आई आजू-बाजू ने रे आजे कोई पण हकड़ो त्रेज वच्चे हकड़े मारू के थेजा चांसेस है અને ई बीमारी थी आई बचे सको ई बीमारी प्रिवेंट करे सको आई हार्ट अटैक प्रूफ थे सको आजे हाथ में आजे मुंह में आई या जो हाथ है आई बड़ो वजहता हते ई आई विचारे ने गाया very good data I got, you know, Princeton University of research paper के वे के consumption of calories India में कैडी calorie consume किए थी, अरे it's very interesting per day per person percentage wise ये लोग analyze किया कि roughly मारू कोड़ो खाइए था, अरे इस study लोग का almost 2 बारी जारी रखा तो इन लोग का पहली स्टडी जब पब्लिश किया तो 87-88 जो डेटा इन लोग का पब्लिश किया यानी कि ई इंफॉर्मेशन मनी कि डेली रूटीन में मने करो खाइए था 60% यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर 60% जो अनाज जो है तो भात 60% भात અને ભાજી પાલે जो भात અને फ्रूट મળે ને ખાલી 6% એટલે આ વિચાર્યો કે ई ખાધે जी રીત हमेज प्रॉब्लम आई ये अगर आई मगज में हैवर ध्यान में रखीला ताकि વધારે आइडिया की जी जो लेक्चर बनतो वांतो અને ई डेटा 87 ने 2 बारे कोठे आई लोका वापस डेटा क्या की फर्क लगे तो आ लोग के ना खाली अनाज में भी थोड़ो ओछो थयो पर સૌથી ખરાબ વસ્તુ જે થઈ આ નેરીના येलो में पीले में કે ई 21% प्रोसेस फूड वधी गयो यानी कि फास्ट फूड इंडस्ट्री आई आजा हार्ड वर्क कमाए जो मरे पिज्जा हट बर्गर किंग वाले के दे जाता संजी मरे अमेरिका की कंपनी में जो हार्ड वर्क मनी यू नो ये चॉइसेस आई बनाया था कंपनी द एडवर्टाइज दे में नथिंग रॉन्ग इतना ही जो जॉब कहीं था
पण आई आजो अंडरस्टैंडिंग करे आई विचारे आके कते आके खर्च नहीं आजा पैसा बेओ आई नेरिंदा कि डेयरी स्लैश एनिमल प्रोडक्ट मुके घणे जणा छे पण जैन तो वेजिटेरियन नहीं हूं ना पण जानवर जी वस्तु खाई था दूध ई जानवर मजानु ज छे मक्खन ई जानवर मजानु ज छे घी ई जानवर मजानु ज छे એટલે આવ જે ન્યુટ્રિશન જો ભણા આવંતી जानवर जी वस्तु चा એટલે आई नो आई होप आव के ऑफेंड નથી કઈયા बट आई एम जस्ट सेइंग द ट्रुथ કે बेसिकली જે जानवर जी वस्तु नॉट नेसेसरी मीट एग्स फिश ई जानवर जी वस्तु है दूध पण जानवर मजानु ज छे ओके અને ઊંચો વપરાશ दूध जो વપરાશ બહુ જ વધે રહ્યો ई आई नेरिंदा અને ही 2000 में पर डे पर्सन ही परसेंटेज में खाईंदा हुआ अगर ही फॉर्मूला ही समझेवाना ने आई आमजा बैकपैक करे खालेवाना अगर ही फॉर्मूला ही समझेवाना आटली इंपॉर्टंट था ई फॉर्मूला ओके ई फॉर्मूला थोड़ा समझाई दी माके हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट डिवाइडेड बाय कैलोरी माने शारीरिक मानसिक आरोग्य इज इक्वल टू खोराक खोराक हम पहला जो आगे खोराक એટલે करो विटामिन्स फाइटोकेमिकल न्यूट्रिएंट्स उनके खोराक चावा છે ओके आई खाली रोटली के खोराक न चावा છે खोराक भाजी पाले के સૌથી વધારે સારો ખોરાક ચાવા છે ફ્રૂટ સારો ખોરાક ચાવા છે બીજ દાળ સારો ખોરાક ચાવા છે અને ખોરાક divided by ઉષ્ણતા कैलोरीज અને ई पॉजिटिव नंबर क्या रहे क्या पॉजिटिव नंबर है अगर न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यू વધારે રહે અને कैलोरीज जो वैल्यू ઓછી રહે तो हेल्थ जो नंबर વધારે રહે आई एम श्योर आ लोग मणी के डिविजन अच्छे तो જ્યારે ई न्यूट्रिएंट जो नंबर ઓછો થવાને અને कैलोरी जो नंबर વધેવાને ત્યારે बीमारी जो रोग चालू થઈએ પાછે શરીર में अगर आई ई समझे वंदा तो बस यू नो आगे समझ पे वही अने ई न्यूट्रिएंट कई वस्तु में आई ई हणे आई विचारे कते न्यूट्रिएंट વધારે यू नो ई ऑलवेज यू नो मुझी जे प्लेट भरेली ते भाजी पाले थी तो आज मुझे सर्च चोला कि ई भाजी पालो ई मणी के बताई नहीं ते लोकानी चोला जानवर खाइए था आ पर एक्चुअली जानवर ज અહીંયા ओके पर आओ एडी जानवर અહીંયા कि मुझे शरीर जी चिंता आए मुझे पैसा जे हार्ड वर्क कमाएला इनके डॉक्टर के ना देना यू नो डॉक्टर अनी जो कम बराबर ज कहीं था पण अयू जे पण ज्ञान धारी नता बराबर पण आटला मेस्ड अप मिक्स्ड अप थेवाई आई घणे जणा न्यूट्रिशन इंटरनेट पे शोधेला અને बुक्स में शोधेला અને आई मीन न्यूट्रिशन आटलो कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट थे गयो है आई फील सॉरी એટલે आई फील के आई लोका आज सोने ने आई आज जो रिसर्च चालू पंजे रीते पण करे सका होपफुली ने अप्लाई करे सका ई बेओ अगरो फूड पिरामिड है ई पिरामिड बाकी करो बताई तो कि ई पिरामिड में कई वस्तु વધારે ખાઈ છી नीचे थी आई चालू करो आजी डेली रूटीन जो पिरामिड हेडो होनी खपे आई आंजो नीचे थी वस्तु मीनिंग आजी रोज की रूटीन में ब्रेकफास्ट लंच डिनर जे पण स्नैक हुए आई नीचे थी चालू करो વધારે भाजी पालो होनी खपे 30 થી 60% की कैलोरी आई हंजी करा कोई आई नेक्स्ट लेवल ते बना कोई फ्रूट्स ने वेज पाजा दाल ने लेग्यूम्स से कठो उनके बना उनके पोटिया आगे पा मणी के फैट खपे पर प्रॉब्लम करो है कंफ्यूजन है मणी के ई लगे कि घी सिवाय सारो फैट अन दुनिया में मले ज नतो नो घी जे सिवाय ब्या सारा फैट नहीं है सारे में सारो फैट ब्या ई तल अलसी सिंग कच्चा सिंग बादाम पिस्ता गजबदा एड़ा सीड्स हैं सूरजमुखी जा सीड्स मळे फैट जा सोर्स है उपान मळे फैट गणे सकूं અને કોઈ સાથે ઊંજે સાથે પણ અનાજ ખાઈ શકું ને बिगेस्ट प्रॉब्लम है नॉर्मली मणी जो अनाज जो कोटो नीचे ने आई नेरीदा मणी के अनाज ब्रेकफास्ट में खपे लंच में अनाज डिनर में अनाज यू नो मणी के 4 मंद रोटली ने आटलो शाक ब्रेकफास्ट में वो बाजरी जा रोटला सीता खानुदा रोज सवार जो पर बाजरी जा रोटला खाया ज्वार जा रोटला खाया न्यूट्रिशन करने आई अगली
एक्सरसाइज कराता आगे आगे कैलोरीज की जरूर आई है विचार पहला अरे कोई आई नो आई आगे प्लान करो जो बैठो ई जस्ट नाउ आइडिया रही कभी घणे जणा जे कंसल्टिंग कई या कोई पण मुझा क्लाइंट्स अचे तो पहला आनी जी कंपनी में जो पेट न तो भरा जे आशा and it's normal natural आजो पेट आई जे सुधी आजो खोरा आई नेरींदा के पांजो पेट हटलो ज रहतो पांजो पेट અને वॉल्यूम रिलेटेड है वॉल्यूम रिलेटेड में यहाँ ठोसेला या वस्तु तो जे स्ट्रेच थी है तो उन्हें ने नसु में नस ने मगज से पाके सिग्नल दे तेर वने ने पाके खबर पड़े के पांजो पेट भराणो पर अगर आया ने पेट में ठोसीता ना भाजी पालो ने रोटली ने खाली भात ने दाल ने शाक ने थोड़ो थोड़ो तई वचलो ने हेडी ते आके लगतो आजो पेट भराई दो छ इधर कैलोरीज है रोटली थी आ भरवाई ते 400 कैलोरीज है खाली અને આ તેલથી ભર્યો 400 कैलोरीज जो तेल મેરો કેટલો ही ભરેલો એટલે સૌથી અગર આગે પેટ ભરવું હોય તો આગે ડેફિનેટલી ભાજી પાલો ઇન્ક્લુડ કરવું ખપે અને ખાયો રોટી પણ આ ભાજી વધારે ઇન્ક્લુડ કર્યો અમને saturated fat I am sure by now e knowledge તો મળી કે જાય both fat is bad yeah saturated fat e કોરો કરે કોલેસ્ટ્રોલ के पाजा कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज करे अमुक सैचुरेटेड फैट अगर पण बहुत कसरत कईंदा अमुक यूटिलाइज थेवाने तो अमीदा टीचा अमुक बर्न थेवाने पर मोस्टली अगर आंजी एक्टिविटी ने यूटिलाइजिंग इनफ न वे तो जे बचेलो सैचुरेटेड फैट एंड खाए वाला ई सीधो आंजे चर्बी बनेवाने वालो सीधो चर्बी उन चर्बी बने ने इधर आंजी नसु के ब्लॉक करेला है तो या कई जाती बीमारी अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं थी है तो आंजी बीमारी कई टाइप जी बदेज वाली होनी तो आई नेरिंदा के पान नेरियो सैचुरेटेड फैट करने आई ये आई नेरियो फ्रूट वेजिटेबल અને દાળું ओके कठोर में बिल्कुल सैचुरेटेड फैट बहुत ओछो है जरा ना जो है तो जी सिंग कच्चा सिंग पण खाई उन्हें पाके थोड़ो तेल मले जवारो है ओंजे कोठिया अकड़ी मुट्ठी बादाम और अकड़ी मुट्ठी बादाम जी गेड़ी हमें खाली के अपरो ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फैट है सामे अब अपरो समोसो करना कटलो आई ले रहा है सैचुरेटेड फैट समोसे जो ऑलमोस्ट 4 ग्राम એટલે 4 મુઠ્ઠી બદામ જી ખાલી તેર વને ને આપણો સમોસે જો સેચ્યુરેટેડ ફેટ આ 4 મુઠ્ઠી બદામ પણ જલ્દી ખાયા જ ન શકો પણ આપણો સમોસો તો ફટફટ ઇનાફ પણ નથી આ પાકે આપણો સમોસો બસ તે તેર સમોસા ખાણા જ ખપે પાકે ઓકે એટલે ઈ ઓલમોસ્ટ 4 ગ્રામ કોઈ 11 અમીતા તો દહીં અને પનીર में પણ સેચ્યુરેટેડ ફેટ lot of time उनके रिप्लाई है अरे पनीर तो प्रोटीन है आई प्रोटीन बई वस्तु थी पण खाई सकवाला पनीर जरूरी ना है पाके प्रोटीन ला करे कैरेट बार वाले कैरेट खाणो है तो डिफरेंट पण ई पाजे शरीर ला जरूरी ना ई वस्तु पाके पनीर जी जरूर ना है योगर्ट जी पण पाके बहु जरूर ना है अठवाडिये में हकड़ी को बार पण दही खाई गंगो तो पाके B12 मले वंगो मेनली सोर्स ऑफ B12 पण अगर जैन के वेजिटेरियन हूं पाके जानवर जी वस्तु मजानु B12 मले ओके ई वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आ मणि के आंजा B12 जा ब्लड वर्क कराणु ज खपे अगर आई वेजिटेरियन गयो या कोई पण जात जो प्राणी एनिमल वस्तु न बने वाला तो B12 आई आंजो टेस्ट कयो ओके B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अठवाडिये में अभी के बार आई दही खाई गया था लगभग आके B12 जो कोटा मले वाले नका सप्लीमेंट इज नॉट बैड सप्लीमेंट हम पण गना की तेरा वाले थी there is nothing wrong એટલે choices are जी choice है बेओ आई नेरिंदा के घी जो नेरो सैचुरेटेड फैट खाली 2 चमची घी 15 ग्राम है અને આવ નોર્મલી નેરિયા બાળું 3-4 રોટી લઈએ આપણી ચમચી ભરી ઘી લગાવીને ખાઈને વઠા તો કટલી ઇમેજિન કટલો સેચ્યુરેટેડ ફેટ બને अगर आई एक्सरसाइज कीच करेगा वाला बारे न वाला है वो चर्बी के तो वो आके बीमारी ज करे वालो ने सौथी हाणे जी प्रॉब्लम आउ नंढी लिया तो आई डोंट थिंक चीज जो वपरा सकलो वो न जे आउ ग्रो अप थी लिया कॉलेज में ने वंदी लिया हाणे आउ नेरियो के दरेक रेस्टोरेंट कोई पण
એટલો હાઈ ઓકે ઈ ચીઝ ને 25 ગ્રામ અને આટલો ટુકડો ઓકે ચીઝ જો આટલે ટુકડો જો આટલી ગ્રામ ઓફ સેચ્યુરેટેડ ફેટ આટલો ટુકડો ને ઈ તો ઇઝીલી પિઝા મે ખાવાના ਹੁੰਦਾ ઘરે જણા અને ધ સેડ પાર્ટ ઇઝ કે હકડેડીને ઈ ઘણી બધી વસ્તુ ખાવા જેવા સમોસા ચીઝ મળે ઘી જી રોટલી મળે હકડેડી મેં ખાવા મળે એટલે એડ કયો અહીંયા જ ને બિચારા કેટલો સેચ્યુરેટેડ ફેટ અહીં ખાયા હતા ઈ સ્લાઇડ ઈ લોકા સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગેરાવા અને ઈ નેરે આકે 1915 में अमेरिका में चीज जो वपराश आई નેરે હતા કેટલો ઓછો 100 વર્ષ પહેલા ओके हाणे आई नेरा 2000 में चीज जो वपराश डबल ना ट्रिपल ना ऑलमोस्ट 4 टाइम बढ़ेलो है मेनली फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट फूड इंडस्ट्री म्हणजे गिरे बढ़ेलो है सॉल्टिंग अवे धावन अंजो तो बोली दिया ताई लोग भगाई लाई ना मुके आगे थी मीठे की जरूर ना आई नो मीठो कडेला मांजे फूड में बहुत डिफिकल्ट वस्तु है आऊं 13 वरे पहला मीठो छड्यो है मुके खबर है महीनो मुके भावती नवी दाल ने शाक में बहुत टफ फॉर्मूला करे पर आज 13 वरे पोठिया गारंटी थी चाहती कि आई मीठो छड्યું तो पाके ब्यास स्वाद એટલા મઠા લાગે એટલા અમેઝિંગ લાગે એટલે આવું આ સબ્જેક્ટ पे बहुत डिस्कशन ना कई दिया बिकॉज़ आई थिंक रिएक्शन मुके जेता इंडिया में चा के आ मीठो नदी खाया रिएक्शन इज लाइक केडी भावे तो या मुके भावे तो बाकी मुके मीठो कभी नहीं मिले तो मुके मीठो बहुत भरपूर मिले तो भाजी पाले दर कैलोरी जे भाजी पालो है तो उनमें मीठो बहुत है दर भाजी में दर फ्रूट में अगर ये भाजी पालो न खाए वाला आया तो डेफिनेटली आगे ऊपर थी मीठो वजू खपदो पर एट द सेम टाइम आके बीमारी तो थेज वाली होय अगर भाजी पाला ना खाइदा એટલે આ ડિસાઈડ કરા આકે કોરો કરનો है એટલે આઈ મીઠે जो વપરાશ धीरे धीरे ओछो करता अमुक वस्तु में कोई अभी वस्तु में वजी की कोशिश ना करिए यू नो अगर आई दाल में न वजह तो शाक में खपे तो एनी टेस्ट ट्राई करो पर ये आजी चॉइस है पर आई एम जस्ट से के मीठे जी जरूर ना है जी बीमारी बहुत थी हाई ब्लड प्रेशर સૌથી આપણી પ્રોમિનન્ટ બીમારી આ મીઠે જે કારણ અને ઓજો ડિસ્કશન આપણો બ્યો કે કલાક લગતો હાઈ બ્લડ પ્રેશર में नेक्स्ट टाइम मे बी आई मुझे इनवाइट करना तो मे बी आ ओजो पर डिस्कशन करे सकती हैं पर यू नो हाई ब्लड प्रेशर वाले में डेफिनेटली मे भी मीठो थी दूर ये આપણો મઠો પોઈઝન આ મીઠો વેરી સ્વીટ પોઈઝન આટલો જ છે 9 contributors heart disease કેરી તે કિએ પાકે કેરી તે 9 contributors નહીં પાંજા અને each contributor આમ જોનિયા આઈ પંજે સેલ્સ में एनालाइज કરી जा કે મુક્યા આઈ કે નહીં ના contributor each contributor dot ટકા દીજા तो यू एड अप करे ने आई जो हार्ट डिजीज जो रिस्क फैक्टर आगे खबर पैरोली इन शॉर्ट यू नो कोई खबर आगे टेस्ट बेस्ट करानी है तो कराई जा पर इन शॉर्ट हैवन ई 4-5 मिनट में आवा के नो पॉइंट्स अगर आके कोई पण आई एड अप कइंदा ने आज परसेंटेज वधो सिगरेट स्मोकिंग डेफिनेटली आई डॉट टका जो अगर आई सिगरेट स्मोक कइंदा होया तो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है abnormal blood lipid meaning आजा कोलेस्ट्रॉल लेवल abnormal वे दवा गंदी खापे आके नॉर्मल करेला करे ई नो abnormal वे तई क्या आई डॉट का ऐड करा ओवरवेट वजन हते तो मुके कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरवेट को डिफिकल्ट है समझाई जो क्योंकि नॉर्मली मुके नेरे मने लगे यार तो दूधी पत्ती है એટલે मुझे साबे के पण ओवर है तो ओवरवेट જ लगे and which is natural तो के यू नो आके ई दसाणु न खपे ए टीच कयो ने આજે પેટ में तो अर्धे इंच की વધારે આ जो होम न खपे पेट અને अगर बे तो मुझे मतलब कि आई थोड़ा यू नो वजन आएगा ओवरवेट है हाई ब्लड प्रेशर बियो फैक्टर है हार्ट डिजीज जो दे आई डॉट टका ऐड થાય